It was just yesterday I was 18, and a decade has gone by. I am 28 now. लगता है I just blinked and time traveled to here. जहाँ पे I had hopes, I had plans. I was very certain life would be a very specific way by now, but somehow all those hopes turned into reality. Some of those hopes turned into big regrets. But the one that never changed in all these years is the time never stopped. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो बहुत दफ़ा सुना है. इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज़ यू आर क्राइंग, इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज़ यू आर हैप्पी, और आपकी कोई प्रॉब्लम के लिए नहीं रुकता है. वक्त बस चलता जाता है. एंड समटाइम्स टाइम हील्स, समटाइम्स इट इंक्रीजेस द पेन if you're not willing to move on. Or somewhere between books, work, social media, family की responsibilities, we are constantly trying to build something. Like life turned into a race with no finish line. पता भी नहीं है कि किसके साथ compete कर रहे हैं हम, कौन आगे है, कौन पीछे, बस दौड़ना है. Always chasing the next thing, always thinking after this I'll finally slow down. College हो गया, slow down, I will slow down after this. नहीं. Job कर लिया, I will slow down after this. नहीं. Every stage of life you will think कि अभी slow down होना है, but हम नहीं करते हैं because we are chasing the next best thing. हम भूल जाते हैं कि जो हमने प्लान क्रिएट किया है, हमने जो माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं, उससे बहुत बड़ा अल्लाह का प्लान है. अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा हुआ है वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है. And the real question was not how much I achieved. The real question is what did I do with the time I was given? It was a gift. It's a privilege. लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिलता जितना हमें मिल रहा है अभी. We scroll endlessly instead of moving our body, which is actually aging. My personal experience is I'm not the same when I was 18. Obviously, I am not. My face looks different, my body moves different, I feel different inside. और जो चीज़ें मैं उस वक्त कर सकती थी, it's practically impossible sometimes for me to do the same with the same energy. There are so many ideas, there are so many things that we can actually do with our life, with our time, बट हमने करना नहीं है. हमने बस बैठ के देखना है कि और कोई अचीव कर रहा है और कोई उसके पीछे मेहनत कर रहा है, एंड हम बैठे रहेंगे. हमारा अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे आके नॉक करेगा, तब मैं डोर खोलूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले लूँगा. ऐसा लाइफ नहीं है. एंड आई थिंक आई विल ब्लिंक अगेन एंड आई विल बी 38 सडनली, एंड मैं सोचती रहूँगी कि हाय सोशल मीडिया शुरू कर लेना चाहिए था, हाय वो जॉब कर लेनी चाहिए थी, अरे वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था. I had so many ideas, I had so many ambitions, but here I am, achieved half, not even half of them probably, और maybe थोड़ी चीज़ों में शायद आगे भी निकल गई हूँ. और बिकॉज़ हमारी जनरेशन ऐसी है, हम इतना वैलिडेशन लोगों का सीख करते हैं कि लाइक मी, आई एम रिच, मुझे सोशल स्टेटस के एक हिसाब से दिखना है, मेरा लाइफस्टाइल एक तरीके से मेंटेन करना है, मैंने जॉब ऐसी करनी है, मैंने मेकअप ऐसा करना है, मैंने खाना ऐसे खाना है, ताकि मैं लोगों को दिखाऊं और वो मेरी इज़्ज़त करें. इज़्ज़त तो अल्लाह अता करने वाला है ना. और हम कभी अल्लाह को क्यों चेज़ नहीं करते? हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में इतना रोना आता है. हम जुम्मा सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं, कभी-कभी तो ईद पे पढ़ते हैं, कि इतना काफ़ी है. मुझे लगता है हम पोस्टपोन करते हैं हर वो ज़रूरी चीज़ को कल पे. What if today is the last day that I go to bed and never wake up? That's a possibility too, right? इस सब में the most crucial thing is we forget that our family, our loved one, our friends are important because they love us and we love them, and the time with them is limited no matter what relationship you are with. Parents, we obviously know they're getting older. Children, we obviously know they will grow up and move on. Your spouse, you have a limited time even with them, they're not going to stay forever. Friends भी हर स्टेज पे दोस्त बदल जाते हैं. So the current time that you have,
squeeze it, spend time with them, be kind with them, and live a life to the fullest, because सभी को एक ही चांस मिलता है ना. you you live once, but you live every day, and try to spend that every day positively, sharing love. इस सब में जो चीज़ें खराब हो भी जाती हैं, we pretend, we convince ourselves actually that we will fix it later. There is always a tomorrow. But here's something I've learned. It's not easy to accept that. चीज़ें छूट जाती हैं, people will disappoint you in ways, people will be selfish right in front of you. अपने बेहतरी वो खुद देखेंगे, and you will just waste your time crying and thinking that, okay, these people are bad, these people are wrong. You be that too. You love yourself so much that you don't let others harm you. Don't waste your time crying over people who don't choose you. Don't beg to be loved. Don't shrink yourself for attention. And the life is already short. Love yourself enough to protect your time. The biggest thing that you can do for yourself is align yourself to Allah. You pray 5 times a day, you take care of your deen and your dunya, and you getting better. You appreciating the gifts that you're given in this time, and inshallah, your life will be so much better than you've ever imagined. And remember, nothing and no one deserves the center of your heart except Allah. Except Allah, no other human is worth your time, your energy, your peace except Allah. I think I will blink again and the time will pass by. I will look back और उस दिन लगेगा कि life just didn't disappear suddenly. It was passing every single day, asking quietly whether you are present enough to notice.